अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक मतलब फिर आज एक इंतहाई अहम प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद। आपका मेज़बान रूहान बिन शम्स पेश खिदमत है। इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 766 वर्जन 839 इस्लाम चैनल उर्दू .tv की वेबसाइट के ज़रिए से पूरी दुनिया में जिस तरीके से आप इस्लाम चैनल देख रहे हैं, आज एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने के लिए आए हैं कि जिसके अंदर ज़िंदगी का बड़ा अहम उसूल और ताल्लुक़ होता है, लेकिन इस तरफ हम उस वक्त तक तवज्जो नहीं देते जब तक कोई मसले मसाइल का शिकार ना हो जाए। सेहत ज़िंदगी के इस प्रोग्राम के अंदर आज हमारी इंतहाई खुशनसीबी कि हमारे साथ डॉक्टर दिया हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर रोमेटोलॉजिस्ट हैं और एक इंतहाई तवील और जदीद तहकीक के अंदर अपने निशान भी रखते हैं, अपना नाम भी रखते हैं। उसके हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ आपके सवालात को लेंगे कि इंसान के जितने भी दर्द हैं, आर्थराइटिस है, अरकनिसा है, या जोड़ों का दर्द है, या मुख्तलिफ जितने भी मसाइल सेहत के हमें शिकार होते हैं, इनका इलाज कैसे हो सकता है, कुछ क्या ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो केमिकल्स के बगैर या बग़ैर किसी सर्जरी के भी आपकी बेहतरी के अमल में आपके तवाना एक जैसे कह सकते हैं कि साथ दे सकते हैं। डॉक्टर दिया साहब ने 1979 के अंदर अपने मेडिकल के सफ़र का आगाज़ किया और 1992 वो साल था कि जिसके अंदर इन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के ज़रिए से पहली मरतबा जो मास्टर्स का एक इन्हें डिग्री दी गई रोमेटोलॉजी के अंदर, वो 1992 के अंदर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से पहली मरतबा जिन साहब ने हासिल किया डॉक्टर दिया हुसैन साहब थे। इससे बढ़ के भी 1996 के अंदर मेरे इनसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्हें बताया कि किंग्स कॉलेज जो बड़ा मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी इदारा है लंदन के अंदर, 1996 के अंदर क्लिनिकल PhD करने वालों में जो पहला नाम था रोमेटोलॉजी के अंदर, वो दोबारा डॉक्टर दिया हुसैन साहब का था कि जिन्होंने अपनी रिसर्च के ज़रिए से PhD के मकाले को सक्सेसफुली डिफेंड भी किया और उसके अंदर हासिल किया एक PhD का एक पूरा एजाज़ जो होता है। उसके साथ साथ हर्पोलॉजी के अंदर इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जो मेडिसिन होम्योपैथिक की है, उसके हवाले से भी अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और बड़ी खुशनसीबी के 2010 के अंदर मेडिसिन के अंदर मैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है वो भी डॉक्टर दिया हुसैन साहब को मिला। इस हवाले से इनका बड़ा एजाज़ है। 20 से ज़ायद अपने मकाले लिख चुके हैं जो मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर मेडिकल के छपे हैं। 55 से ज़ायद इन्होंने जैसे कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट्स ऐसे लिखे हैं कि जो मुख्तलिफ जितने भी मेडिकल के जर्नल्स होते हैं उनके अंदर शाये किए गए और पूरी दुनिया में 40 से ज़ायद कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जगहों के ऊपर लंदन में, इस्तांबुल में, जद्दा में मुख्तलिफ मरीज़ों की ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं। हम डॉक्टर दया से आज आपका यहाँ पे तारुफ़ भी कराएंगे, आप लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई दर्द के हवाले से, कोई जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, अरकनिसा है, तो ज़रूर डॉक्टर साहब से फ़ोन करके आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं और देखते हैं कि कौन सा एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसके ज़रिए से महदूद मुद्दत में उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? Fine, thank you. You all okay now? Alhamdulillah. If we Okay. are live, it's all okay, inshallah. It will be fine. Inshallah. Dr. Let's speak about this rheumatology. It's a very unique and different concept. Not many people know about this. So what is this rheumatism? Actually, term of rheumatism used to describe a number of painful conditions of muscles, tendon, ligaments, joints, and bones. And it's more than 200 conditions. Types and yeah, about more than 200. Some people say 300. And it's divided by two. Either it be localized, like bursitis, tendinitis, or generalized, like fibromyalgia. So either it is a very localized sort of an issue. Yeah, like tendinitis in the tendinitis in knee here. or hand or joint. Yeah, in some tennis place. elbow, or carpal tunnel syndrome. more generalized. Yeah, or more generalized. सही। और यही नाज़रीन कराम जो मैंने आपको शुरू में थोड़ा बहुत तारुफ जो रखा था कि ये जो दर्द हैं खुसूसन जोड़ों का, जैसे डॉक्टर साहब रोमेटिज़म के हवाले से तज़किरा करें कि 200 या 300 से ज़्यादा अक़साम के जो पूरी बॉडी में दर्द होते हैं, इनका इलाज इनका खुसूसी तौर पे एहतमाम करना और कुछ ऐसे तरीके से करना कि जो बाकी तरीक़ों से ट्रीटमेंट से ज़रा हट के है। तो इसी हवाले से ज़रूर इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और पूछते भी रहेंगे कि इसमें कैसे इलाज होते हैं, क्या तरीक़ेकार ये भी अपनाते हैं। एंड डॉक्टर दिया, आई थिंक दिस autoimmune rheumatism, that's another concept that's very common. So what's the autoimmune rheumatism that normally comes? It's like a rheumatic disease which characterized by inflammation and for immune system abnormalities. Usually the immune system, what they call dysregulation of immune system, and like the immune system will attack itself. For that it's called autoimmune disease, like auto.
attack it's an automated system that goes wrong internally within the body. And यही जो मैं शुरू में तस्करा किया कि ये एक बड़ा दर्द का जो पहलू होता है, दर्द तो इंसान को जहाँ भी होता है वो इंसान से बर्दाश्त से बाहर होता है, वो दुआएं मांगता है अल्लाह मियां सही कर दे इस दर्द को, लेकिन अक्सर औक़ात ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है ये भी बड़ी अहम होती है। डॉक्टर साहब इसका तस्करा कह रहे हैं कि इंसान का जो अपना मुदाफ़ियती निज़ाम होता है बॉडी के अंदर, हमारे चीज़ों को सही करने का इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है ये ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से भी कई दर्द की अक़साम जो है वो पैदा हो जाती हैं। और ये चीज़ें नाज़रीन किराम ये हमारी रोज़ाना आम मरा ज़िंदगी के अंदर शामिल होती हैं। बूढ़े होते हैं अक्सर जो हमारे वालिदैन हैं या हमारे साथ जो बूढ़े बुज़ुर्ग रह रहे होते हैं, जोड़ों में दर्द होना, यहाँ पे हाथों के अंदर आर्थराइटिस का हो जाना, तो इन चीज़ों के हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए और कुछ कोशिश करनी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट्स डॉक्टर दया साहब की हैं इसके हवाले से भी हम देख सकें कि क्या ऐसे इलाज हो सकते हैं कि जिनको इनके ज़रिए से आसानी के ज़रिए से हल किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, if somebody suffers from rheumatism, if he is a patient, how do they present it? Like how does a patient presents rheumatism, and if they leave it untreated for a while, can it get worse as well? Yeah, actually, first presentation symptom usually pain in the joint or arthritis. Now the different pain usually it's easy to treat, and arthritis maybe take longer time and need other drugs with chemotherapy sometimes. But if not treated, the problem will be complication and will affect major organs such as kidney, brain, and skin, which could be irreversible. For that, it's diagnosed and treatment early is very good. And is just a connected question to this one, does age have any impact on it? Like younger people get better quickly and older people? Yeah, some diseases usually old age or some even infant, baby children could affect the rheumatism. It's not different between, but there is 200 types conditions. Some in younger, some older, some children. And there can be so many other varieties, so many other disease, so many other things linked to it. And ये एक वाकई में मुश्किल है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं तो हम उनको भी शामिल करते हैं, कुछ उनसे सवाल भी पूछते हैं, फिर डॉक्टर साहब से और भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जनाब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, हाँ, ये रूमेटॉइड की बात करें, मैं इसका पेशेंट हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और ये मैंने देखा है कि मुझे खाने जो बॉडी में जाता है, जैसे कि आप चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ है, मुझे इस चीज़ों से प्रॉब्लम है। अगर मैं सोच समझ के कंजम्पशन नहीं करता अपनी बॉडी में, मेरी इन्फ्लेमेशन आ जाती है हाथों पे, ज्यादातर रिस्ट पे, बाजू पे और शोल्डर्स पे। और मैंने एक दिन सोचा कि मैं एक हफ्ता मैंने इन चीजों को हाथ नहीं लगाया तो मैं काम डाउन था, लेकिन फिर डेयरी प्रोडक्ट, ये बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड होता है। अगर आपकी बॉडी कुछ चीजों को एक्सेप्ट करती है फाइन, इफ नॉट, मुझे स्वीट से, चॉकलेट से, स्वीट से जो है बेसिक मेन पॉइंट है, स्वीट से जो है मुझे इन्फ्लेमेशन उभर आती है। अच्छा, आप इसलिए इसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं कोई? वैसे ट्रीटमेंट क्या करा रहे हैं? जी, मैं यहाँ रोहैम्पटन में एक हॉस्पिटल है क्वीन मेरी, तो वहाँ पे डॉक्टर उन्होंने मुझे मेथ्रोटेक्सेट दी है। मेथ्रोटेक्सेट वो मैं 6 लेता हूँ हफ्ते को, मंडे को लेता हूँ, और दूसरी जो उन्होंने मुझे दी है उसका नाम है फ्लोरिक एसिड। ये 2 गोलियां जो है ये ब्लड चेक करने के बाद ही आपको ये देते हैं, वरना ऐसे ये एंटी कैंसर भी इसको कहते हैं। मेथ्रोटेक्सेट जो है वो एंटी कैंसर भी है, मतलब इसका थोड़ा ख्याल रखना कि ये आपको इफेक्ट कर, ये मतलब आपके लिए काम कर रही है। और जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनका, और मुझे एक गोली है, जैसे मैंने कहा बॉडी टू बॉडी, मैं गारंटी देता हूँ उसे ठीक हो जाएगा, वो है नेप्रोक्सिन। सही है, वो एंटी नेप्रोक्सिन उसको कहते हैं, वो 500 mg के ले रहा हूँ, उससे जो इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कम होता है। ठीक है। अच्छा, आप लाइन पे रहें, डॉक्टर साहब से हम इस पे हवाले से भी बात करते हैं और पूछते भी हैं। डॉक्टर साहब, he was talking about, I'm sorry, I'm disturb you. I understand it about you know Urdu as well then, mashallah. Rheumatoid arthritis on methotrexate and folic acid and naproxen. Yes. And he asked about diet.
Exactly, about their dairy products and yeah, sweets. Actually, usually we have to see the causes of the disease. I know rheumatoid arthritis nowadays they have several drugs and now anti-TNF biological treatment, but some doctors forget about the, you know, like as example, if you have water from here, if you close it and then water will come from other place, you close it. So you don't you have just soak. for that my approach holistic. I treat as general, not only localized for the disease itself. We have to check about emotional around. As example, if I treat him and his father or his wife make trouble, a lot of trouble with him, no benefit of disease of drugs Treatment. because we have treatment. It's okay after treatment, and he has some external things will exaggerate the disease, and we have continue all the time. For that, some people treat all his life on the treatment because they didn't stop the thing like from outside, like emotion, like diet very important. When 1993, when I asked my supervisor, Doctor, I'll just stop you for a second here. We have one more caller, so we'll take his question as well, and then we'll come back to the answers together. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. जी कहिए. अच्छा मैंने टीवी पे देख रही हूँ, मेरी टॉपिक तो हट के इससे. I have got this buzzing sound in my ears. इसके लिए कुछ पूछना था अगर कोई है ट्रीटमेंट तो. अच्छा, मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ. आप कहाँ से आपने कॉल किया? मैं लंदन से कर रही हूँ. लंदन से कॉल कर रही हैं. चलें, मैं ये भी इनसे इंशाल्लाह पूछता हूँ. और शुक्रिया आपके कॉल करने का. डॉक्टर साहब, आई थिंक we'll go back to the first question for a bit, and then she asked about burning sounds in her ears, so we'll tackle that as well. But you're saying that for treatment it is important to consider all the other factors, not just one or two medicine and treating it. For that, what they call, I'm using holistic approach, which mean like physical, emotional, lifestyle, including food. But when I start my PhD in 1993, I asked my supervisor, please, I would like to make diet and arthritis. He said, no, this is controversial. A lot of people will be against you. After 10 years, he said, you are right, that there is a relation, a link between diet and arthritis. This first thing. The most important, we have to deal the patient whole, as a whole, not only one symptom or two symptoms. As example, patient, I have complaint here. I have to examine all the joint because maybe the connection together. We ask about history. Maybe he has another disease like diabetes, also had arthritis. Fair enough. And also some diseases like hematology, this disorder has some manifestation of joint pain. Links. Yeah, we have just not concentrate. We have, as example, naproxen. He is taking naproxen, methotrexate and folic acid, no problem. But naproxen, I don't like to any non-steroidal. I am, because the side effect of non-steroidal for kidney, for liver, for gastrointestinal. Some patient came from severe bleeding because non-steroidal. And this is very dangerous. Yeah, it is. We have to treat the patient, not analgesic. Because analgesic temporary. After 12 hours finish, you have to give. But methotrexate is treat. But he has to follow up about liver function test and CBC every 2 months. Just to make sure there's no impact, not any side effect. और ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी इस हवाले से मेरे ख्याल में बात की है. हमारे भाई ने जो रोयहम्पटन यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, जो तस्करा कर रहे थे कि ना सिर्फ ये कि डिज़ीज़ का अगर लोकलाइज्ड कोई इसका इशू है, बल्कि होलिस्टिक तौर के ऊपर, मुकम्मल तौर के ऊपर आप देखें कि आपके इमोशनली, आपके ताल्लुकात के अंदर, घर के अंदर स्ट्रेस का, मियाँ बीवी का, वालदैन का कोई मसला हो, खाने पीने का तो एहतियात है ही उसके अंदर शामिल. ये तमाम चीज़ें जब आप होलिस्टिकली देखते हैं तब मेरे ख्याल में इसके अंदर बेहतरी का ज़्यादा भी इम्कान होता है. तो ये बड़ा अच्छा, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया. हमारे कॉलर जिन्होंने कॉल की, बड़ा अच्छा आपने बात की तरफ तवज्जो दिलाई. और भी आपके साथ हों तो ज़रूर उसको शामिल करते हैं. डॉक्टर साहब, वील टेक वन मोर कॉल एंड देन वील गो बैक टू द क्वेश्चंस अगेन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम। जी जनाब कहिए। जी आप कैसे हैं? ठीक ही हो? आपकी दुआएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ये दवाई अपने के बारे में पूछा था, मुझे दानू टांगों में दर्द है और दानू बाजू में दर्द है, पूरे बदन में दर्द है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, दोनों टांगों में, दोनों बाजुओं में और दिल में भी आपके दर्द? और दिल में भी और पूरे बदन में कभी कभी दर्द था, मैं ना बैठ सकता हूँ ना खा सकता हूँ, तकलीफ है ये। ठीक है, अच्छा आप लाइन पे रहें, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, फिर अगर कोई और चीज़ हो ना तो वो भी पूछ लें। डॉक्टर साहब, ही इज टॉकिंग अबाउट पेन इन बोथ हिज लेग्स, इन हिज आर्म्स एंड हिज हार्ट. Is there a connection? He's still online with us, so if you need to ask any question, we can ask him. Any previous attacks of tonsillitis, recurrent tonsillitis, recurrent sore throat? आपके गले में, टॉन्सिल्स में कोई ऐसे कोई मसला हुआ है पहले? ये कभी नहीं हुआ, कभी कभी जो ना इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, वो दवाई देते हैं तो उससे फर्क पड़ जाता है। सही है। He's saying that it sometimes hurts in his throat, and he takes some medicine, augmentin and something, and it recovers that as well. No, this is he has to go to ENT specialist to see if there is need to remove the tonsil, because sometimes what they call rheumatic disease usually is coming after several attack of sore throat, and bacteria will come to joints, and sometime today here. After that, the other joint, somewhere else. What they call, it is, I mean, migratory. It's come from joint to joint. Then he has first thing. There is any fever with the symptoms or no fever? No fever. He was saying he's no fever. He doesn't get fever. Yeah, but just double check about. Oh, there is lab also blood test. They diagnose the cause. Any problem in the heart, he has to go to cardiologist to check about the problem, and then the joint pain. If this continue, then we have to find the source of this. As I told you, maybe the cardiac could affect the joint. Okay, I'll tell in Urdu to him as well, and then we'll take another call. So, डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि ये आप कोशिश ये करें, जो हमारे कॉलर जो टांगों को और हाथों को और दिल के दर्द का बताया, कि ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके और टॉन्सिल्स का पूरा एक चेकअप कराएं और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चले कि ये सोर्स क्या है इस दर्द की, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी रोमेटिक डिजीज़ अगर होगी तो उसके आगे ट्रीटमेंट की जा सकेगी. सो वील टेक वन मोर कॉलर. देयर इज अनदर कॉलर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. हाँ वालेकुम. जनाब कहिए. हाँ वालेकुम. जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जब मैं बैठता हूँ तो बहुत तकलीफ होता है, बैक मेरे जोड़ों को बहुत दुखता है, जो लिप्स अच्छा भी हो जाता है और फिर ये पेन शुरू हो जाता है. ओके, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि रिपीट ना हो, और आप लाइन पे रहें. मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ. डॉक्टर साहब, ही इज सेइंग दैट व्हेन ही सिट्स डाउन only then his legs started paining, and there's sometimes pain when he's the leg or in the joint. आपके पाँव में या इसमें जोड़ के अंदर, ये जैसे कहने घुटने में, या इसमें दर्द होता है या पाँव में दर्द होता है? ये जो बैक है ना, बैक में और हिप्स, दोनों हिप्स में. ठीक है. जब खांसी होती है ना, कफ होता है ना, तो बहुत पेन होता है. मैं पूछ रहा हूँ कि he is saying lower back and this hip area, and then especially when he starts coughing, that's where the pain really gets. Like it look like sciatica. What they call عرق النساء in Arabic or Urdu, عرق النساء, because the pain radiation from back when he cough, there is something. I mean there is maybe disc prolapse could hit cause the pain when increase the pressure inside the spinal cord. Radiated to down. Okay, we'll get to the treatment on this. There are two more callers, so हम उनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी आंटी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? From London. जी जी पूछिए. The doctor mentioned the role of diet and arthritis.
can he briefly say what a person with osteoarthritis should avoid as far as diet is concerned? Okay. Thank you very much. We have one more caller. Okay. We'll take one more caller and then tackle those questions together. Assalamu alaikum. जी जी आप लाइन पे हैं, आप कहिए. हेलो. जी जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कहिए. मैं डनकास्ट से बोल रही हूँ. मैंने भी एक क्वेश्चन करना था. पूछिए. हाँ जी, मुझे ऐसा है कि बीमार हूँ. मुझे रिसेंटली अभी थोड़ा सा स्ट्रोक का कुछ हुआ था. ठीक. तो फिर वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो नहीं, मतलब थोड़ा सा आस पड़ी पड़ा है, तो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में चला गई, सब ठीक था. वो कहते थे स्ट्रोक का थोड़ा हुआ है, मिनी स्ट्रोक. सही. हाँ, तो फिर मुझे पहले ये था कि मुझे पेस मेकर पड़ा हुआ है. ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. पहले भी कुछ नहीं था. फिर मेरे शुगर भी है मुझे. सही. तो फिर मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे कभी पहले हुआ नहीं है. ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ है. तो फिर मुझे शुगर भी थी, तो इसलिए फिर पता नहीं वो मिनी स्ट्रोक हुआ क्या. ब्लड प्रेशर वो फिर दवाई वगैरह भी उन्होंने दी है, लेकिन वो स्टिल अभी तक देते हैं, कभी ऊपर हो ही जाता है. और आपको दर्द भी कहीं है? दर्द है मुझे, मैं आर्थराइटिस है मुझे. आर्थराइटिस. हाँ जी, वो है, मुझे दवाई देते हैं. लेकिन एक दफा मुझे क्या हुआ कि किडनी इन्फेक्शन हुआ है. किडनी इन्फेक्शन. वो फिर मतलब वो हुआ है. मेरे डॉक्टर ने बोला था, ठीक हो गया था. फिर मेरे डॉक्टर ने बोला था कि फिर 23 या 22% मतलब किडनियां मतलब काम करती हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक काम करती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो वो बस वो कहने लगा कि उन पर मतलब फक्त होता है. ठीक है, आप लाइन पे रहें. मैं डॉक्टर साहब से इसके हवाले से भी बात करते हैं, इस पे भी थोड़ी बात करते हैं. और अगर कोई पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब तो फिर आपसे पूछ भी लेंगे. डॉक्टर साहब, शी इज सेइंग दैट शी हैज़ आर्थराइटिस, शी सफर्ड फ्रॉम अ माइनर स्ट्रोक, शी हैज़ गॉट अ पेसमेकर इन हार्ट. She had a kidney infection, and doctors told her that it's about 22-24% still working. And then she also has diabetes. So how can she manage arthritis with all the other conditions as well? Yeah, actually. And if you want to ask, she's still on the line as well. Yeah, how old is she? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 70 साल. 70. Yeah, and she had previous attacks of sore throat or आपके गले में पहले दर्द हुआ कभी? टॉन्सिल्स? नहीं, गले में दर्द नहीं हुआ. या हार्ट में? हार्ट में हुआ था. तो फिर ऐसा था कि चेक करते करते फिर पेसमेकर आ गया. हाँ, पाकिस्तान गई हूँ. फिर उसके बाद वापस आई हूँ तो कुछ थोड़ा भी ज्यादा ही हो रहा था. ठीक है. तो स्पेशलिस्ट ने मुझे चेक किया, कहने लगा नहीं, अब तुम्हारा वो डालेंगे अपना पेसमेकर लगाना पड़ेगा. ठीक है. Now she's saying that throat is fine, but heart she has pacemaker and it was paining slowly. And they took on the pacemaker for her as well. So the question is about managing arthritis. How can she? Yeah, in general, patient with many chronic disease, we have to treat one by one. Or in general, we can give advice for physical exercise, need to be on a special diet to avoid things like to control diabetes and control joint pain. She has to sit down. This is the relation also with the other one with osteoarthritis. He has pain during sitting. And the one sciatica. We ask patient usually to every half an hour. Don't sit down more than half an hour. Every half an hour change. Or just move a few steps and then come back. Don't stay more than half an hour. So it's about diet, good movement, good exercise, and controlling sugar. Controlling sugar. And for the osteoarthritis, that's again to avoid similar thing. Mainly to avoid salts and sugar. Salts and sugars. And try to eat fish. As much. It's better than meat and or chicken. Okay, we'll take two more calls, I think, and then we'll go back to आप दोबारा फिर सवाल डॉक्टर साहब से करते हैं. जो पहले कॉलर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी मैं होल्ड पे हूँ ना? नहीं, आप लाइन पे आ गई हैं स्टूडियो में. कहिए. ओके. जी पूछिए, सवाल पूछिए. हेलो. जी, सवाल पूछिए आप अपना. जी ओके. मुझे पूछना था कि मैं नियरली 40 हूँ और मेरा RH फैक्टर तो नेगेटिव था. विटामिन डी थोड़ा कम था और उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गया था, स्पेशली जो है ना ये पाँव की एड़ियों में और ये
बोथ नीज में। सही, ठीक है, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से। बिल्कुल, एक और कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछिए, सवाल पूछिए। जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी दोनों नीज में आर्थराइटिस है। सही। और वो चलने में काफी तकलीफ, ज्यादा चलती हूँ तो ज्यादा तकलीफ हो जाती है, और रात में भी जब सोती हूँ तो बहुत घुटनों में दर्द होता है, चीजें पड़ती हैं। ठीक है। और उन्होंने वो नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा है मुझे, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैंने किया। और एक और बात है कि मेरे रात में दोनों हाथ सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल नम हो जाते हैं। सही है। तो वो किस लिए होते हैं कि मेरी नींद खराब हो जाती है, फिर मैं रातों को बहुत झटक के फिर दोबारा सोती हूँ, मगर वो पूरा रात मेरे नम रहते हैं हाथ। ठीक है, चलें, ये आप लाइन पे रहिएगा, हम डॉक्टर साहब से इसके हवाले से बातचीत भी करेंगे, सवाल भी कर लेंगे। डॉक्टर साहब, शी इज सेइंग शी हैज आर्थराइटिस इन हर नीज, बट व्हेन शी स्लीप्स हर बोथ हैंड्स go numb, and then when she wakes up in the middle of the night just to move her hands again, and then they get all the feelings back in there. So what can, and she's also been recommended for a knee replacement. Yeah, I think the most important, how old is she and her weight? Okay, आपकी उम्र कितनी है? 8 है और मेरा वेट 60 kg है। 60 kg, और उम्र कितनी बताई आपने? 68 years। 68, ठीक है। एक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब से दोबारा गुफ्तगू करते हैं। इसके जितने सवालात आपके आते जा रहे हैं ये पूछते जाएं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से हम दोबारा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। डॉक्टर दिया हुसैन साहब आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ रूमेटोलॉजी के हवाले से, कुछ दर्द के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आप तमाम लोगों की कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सवालात हमारे पास जमा भी हो चुके हैं, काफ़ी कॉलर्स हमारे साथ यहाँ पे लाइन पे भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक हमारे जो दोस्त हैं सलीम भाई, उनके कुछ जो दर्द है लोअर बैक का, तो उसके ट्रीटमेंट के हवाले से हमने कहा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सके और फौरी तौर पे आपको दिखाया जा सके कि डॉक्टर दिया हुसैन साहब की जो ये ट्रीटमेंट है इसके ज़रिए से कैसे इलाज किया जाता है और क्या इसका बेहतरी हो सकती है। तो जल्दी से ये करते हैं, फिर दोबारा आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखते हैं, आपसे सवालात भी लेते हैं और फिर ऐसा ऐसा इसको इंशाल्लाह आगे भी ले के चलते हैं। सो डॉक्टर दिया, वी हैव सलीम भाई हियर, ही इज़ अवर इन चार्ज फॉर ट्रांसमिशन एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द चैनल एज वेल, बट ही इज़ बीन सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन एज वेल. So do you want to demonstrate it? How do you check people with lower back pain? And then if you go into the quick treatment as well. Actually there is a long examination, but roughly because you don't have time. Now because I need to examine patient before treatment and after treatment immediately to see how affect the most important two symptom and sign, two signs. First, please could you come to measure the power of each one? I'm just going to put my weight. Yeah. You can lift your leg. You couldn't move his leg more than this, and other one? This is weak. ये नाज़रीन जैसे वो बता रहे हैं कि ये जब वो he couldn't raise it at all. कि वो कितना ऊपर उठा सकता है. Other thing, please could you bend like this to see how when the pain come and stop. Yeah, pain. Stop. Pain now. Okay. Yes. You couldn't more. Okay. Please come. Sit down. Thank you. As I told you about my method about laser acupuncture, I do low level laser in acupuncture points. I developed this because to avoid many session. Some patient need one session or two session or three maximum, not like other physiotherapy or 12, acupuncture 13. 12 session, 13 session. Because I discovered that some patient could improve one session. Why we ask him to do several sessions? And when I ask patient, did he put this point? He said no. He put it in 7 session. Because if he put it from the first session, the patient not come again. He's improved. But I try to make it in 1 session or 2 session maximum, and the pain, inshallah, improve immediately. Alhamdulillah. This could you touch this one. On all the points in your ear, I'll give you this glasses just in case. Yes. अब ये एक
क्विक ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स दिया साहब Yeah, just I will show you brief points. And I'll keep telling people in Urdu as well, so Yeah, that they understand it. So this is all our body in the ear and hand and feet. सही. But now I concentrate on the ear because no time. I just a few तो points. बता रहे हैं कि पूरे जिस्म के जो दर्द के तरीका है वो कानों के अंदर और हाथों में जुड़ा हुआ होता है. तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो है उनके कान के स्पेशल जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट लो लेज़र के ज़रिए कर रहे हैं ताकि ये दर्द के फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसा इलाज किया जा सके कि जिसमें आपको इमीडिएट इंशाल्लाह बेहतरी भी नज़र आ सके. और इसमें तरीके का डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि बजाय कि ऑक्यूपंक्चर के 12, 12, 13 सेशंस किए जाएँ बल्कि उसको महदूद मकदार के अंदर 3 या 4 सेशंस के अंदर कोशिश की जाए कि इस दर्द का मुकम्मल तौर पे इलाज किया जा सके और जितना भी अर्कोनिसा का हो, आर्थराइटिस का हो या जोड़ों का या नी का या कहीं भी ऐसे दर्द हो इनमें बेहतरी लाई जा सके. तो ये डॉक्टर साहब का आपने देखा कि ये इस वक्त पॉइंट्स के ऊपर सलीम भाई जो हमारे हैं जिनके उन्होंने बताया था कि लोअर बैक और टांगों का दर्द इनको काफ़ी है, तो उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ये लो इंटेंसिटी लेज़र्स के ज़रिए से ट्रीटमेंट की जाती है. और इसमें डॉक्टर ज़िया साहब ने जैसे तस्करा किया कि रोमेटोलॉजी के अंदर ये इन्होंने बड़ी बेहतरीन अपनी रिसर्च की 1993 से 1996 तक इसी के ऊपर किंग्स यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने यहाँ पे बेहतरीन इसके ऊपर पीएचडी क्लिनिकल पीएचडी जो कंप्लीट की किंग्स कॉलेज से वो भी इसी उसके ऊपर किया. और डॉक्टर साहब ने बताया कि एक पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो किया जाता है जिसमें लेज़र पॉइंट्स के ज़रिए से, डाइट के ज़रिए से, इमोशनल थेरेपी के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों को शामिल किया जाता है. This is supposed to be 12 session, but I try to make it 1 or 2 for time. और वही डॉक्टर साहब तस्करा कह रहे हैं कि 12 या 13 सेशंस के बजाय 1 और 2 1 या 2 सेशंस के अंदर इनका ऐसे बेहतरी के अंदर इलाज किया जा सके कि उसका फौरी इम्पैक्ट नज़र आए. और ऑक्यूपंक्चर के अंदर ये डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि कई लोग आते हैं कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर 7वें या 8वें 7th और 8th सेशन में जाके उन्होंने उस पॉइंट को हिट किया होता है. तो डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि उसको शुरू के ही 2 या 3 सेशंस के अंदर कवर कर लिया जाए ताकि ना सिर्फ ये कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो बल्कि ये कि बेहतरी की तरफ आपका सफ़र जल्द से जल्द शुरू किया जा सके. तो सलीम भाई यहाँ पे हमारा इनका चल रहा है सेशन एक छोटा सा. सलीम भाई कैसा लग रहा है आपको? Sometimes it's painful. Sometimes it's fair. Now also we give special diet for some patient has arthritis to avoid some kinds of food which could exaggerate pain and inflammation. वो बता रहे हैं कि आर्थराइटिस का खुसूसी तौर पे डाइट से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि खाना पीने का आप एहतियात करेंगे, एक्सरसाइज, मोशन. एक बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जिनके आर्थराइटिस या नी में जॉइंट्स का पेन है 1 आवर या 1 घंटे तक बैठने के बजाय आप मूवमेंट जारी रखें. आधा घंटा बैठें फिर उठें फिर चलें. Now just 2 more points and then we'll examine. Doctor, what's the connection with the ears? Why? Yeah, because all the like in acupuncture points there is ear and hand and feet, all the body in the ear. As example, here knee and here shoulder, here neck. Now, I ask you please again, could you come here to examine the power here? अब ये ट्रीटमेंट के बाद देखते हैं कि इनके कितना फर्क पड़ा है. Here, just right. Finish. I right. Lift it. Yeah. It's a bit better. You see how different? It's a bit 4 better. out of 5. Yeah. Now, no. Now, because just I will did one ear. Now we need another ear. I asked one patient, please give me another ear. Other he said, no, I have one ear to avoid pain. You have another ear. Yeah, but You have 2 ears. Alhamdulillah. Now I will do other ear. I have to go there, or you can sit down here. No, I just turn around. No. Or turn around. Turn around. Yeah. अब आपने देखा कि सीधी I'm sorry here because it's supposed to be on the bed, but because you don't have bed here. सही. डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दोनों कान इंसान के हैं हमारे जिस्म के अंदर. ये जो दोनों कान होते हैं ये ऑक्यूपंक्चर के अहम पॉइंट्स के अंदर से एक होते हैं कि जिनके ज़रिए से पूरी बॉडी के आपके पेन का इलाज किया जा सकता है. तो अब उन्होंने पहले आपने देखा कि दाएं कान की तरफ सलीम भाई के उन्होंने पूरे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसके ऊपर लो लेज़र थेरेपी जो है उसके ज़रिए से अपने वो इलाज किया. और आपने देखा कि उनकी सीधी टांग पे फ़र्क फ़ौरन नज़र आया कि उन्होंने जब उठाया तो उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी थी. तो अब ये उल्टी तरफ कर रहे हैं ताकि जो है उल्टी टांग की तरफ इनका वो किया जाए और उस पर जब दोबारा मुआयना करेंगे, टेस्ट करेंगे
तो फौरी तौर पे उसका भी कुछ इम्पैक्ट था कि नज़र आए और पता चले कि इसके अंदर बेहतरी का क्या इलाज हो सकता है। और ये डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर दिया, सो यू विल रिकमेंड डाइट along with these things as well, so make it more holistic, as you were saying. Yeah, holistic. And as you see, there's some points it's painful, Very painful. but what they said, no pain, no gain. Yes. बिल्कुल। You can tolerate pain few minutes. It's better than complaining of Again hours or months or. सही। Now I have, because it's not good position this. Now maybe I will have back pain. It's supposed to be on the bed, but because you have limited space. Exactly. Okay, and just I have 2 points more. अब कान के जितने भी पॉइंट्स हैं आप देख रहे होंगे कि वो बड़ी एहतियात के साथ के कान के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम। Okay, now just I'm doing ear. There is still hands and feet, but because for time being. वो बता रहे हैं कि ये हाथों के अंदर, पाँवों के अंदर ये तमाम जितने पॉइंट्स होते हैं इनका वहाँ पे इलाज किया जाता है, उसके ज़रिए से बेहतर जा सकते हैं। अभी वक्त क्योंकि महदूद है, आप सब हजरात की और जितने नाजरीन हैं उनकी कॉल्स भी हमें लेनी है, तो हमने कहा कि एक छोटा सा आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया जाए कि कैसे तरीका इलाज रोमेटोलॉजी का डॉक्टर साहब ने जो एक होलिस्टिक पूरा इलाज जो है इसका वो कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है। Now could you come to examine both? अब हम बाईं टांग के अंदर उनकी देखते हैं कि ताकत। It's okay. Yeah, okay. And I try to put your leg down. You see now just. Yeah, it's better. I can go to the end. You Yeah, see? it's better. नीचे जा रहे हैं। Thank you, Much better doctor. in माशाल्लाह 10 minutes. 10 minutes। Thank you so much. सलीम भाई That's fine. बहुत No ज़बरदस्त। pain, no gain. नो पेन, नो गेन। No pain. सलीम भाई कैसा महसूस हुआ आपको ओवरऑल ट्रीटमेंट से पहले और बाद में? Treatment is okay, short, but you have to be brave, with big heart, because at times it's very painful. सही। But the gain is immediate. You Gain can is feel immediate. it, and no back pain, and it's easier to make all these exercises without doubt. बेहतरीन, Yeah, बेहतरीन, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त। जी आपने देखा कि यहाँ पे फौरी तौर के ऊपर जो सलीम भाई का यहाँ पे हमने वो किया कि उनकी थोड़ी सी देर की ट्रीटमेंट के अंदर फ़र्क आपने देखा कि वो नीचे झुकना भी उनको आसानी हुई है, टांगों के अंदर उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, और इस हवाले से जो पूरे जो पॉइंट्स के अंदर ऑक्यूपंक्चर जो उन्होंने आपको बताया कि डॉक्टर दिया साहब ने यहाँ पे आपके सामने मुजाहरा किया जिस चीज़ का कि उसके ज़रिए से बेहतरी फ़ौरी तौर पे लाई जा सकती है। इसमें अभी तो सिर्फ क्योंकि वक्त कम था, डॉक्टर दिया साहब तस्करा कर रहे थे कि हैंड्स ये हाथ के अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, उन पे भी किया जाता है, टांगों के अंदर पॉइंट्स होते हैं जो टांगों के अंदर उसके ऊपर किया जाता है, और जितना भी ये दर्द होते हैं, जितनी भी ये मुश्किलात होती हैं, 2 से 3 सेशंस के अंदर कोशिश की जाती है कि इनको बेहतर बनाया जा सके। तो ये सलीम भाई हमारे साथ थे, यहाँ पे आपने इनका मुजाहरा देखा। डॉक्टर दिस इज़ really good for people who don't have much time, for example, at times, or they are traveling. And I have some patients from America, from Canada, just have 2 days. As come Thursday, Friday, and come going back. So this is very good for the patient who has severe pain and he couldn't tolerate waiting. And this is instead of giving non-steroidal anti-inflammatory. We have in our body, mashallah, Allah create a lot of natural substance could exaggerate by this point. We can increase the production of like endorphin or serotonin, and this is a natural substance, and will make this much better than non-steroidal anti-inflammatory, steroids or anything which else. affect the stomach and side effect, a lot of side. And Dr. Saab, two questions I think we had beforehand was one, this lady called about 68 years old and 60 kilogram, and she was having numbness in her hands. Yeah. So can we answer this, or shall we take one more caller? Okay, we have one more caller, then we'll take this as well. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. जी जी कहिए। मैं शुरू कर दूं? जी सवाल पूछिए। जी, I have a history of pain within all over the body. All body. All body. I've had 10 heart attacks. 10 heart attacks. And I suffer from angina constantly. Angina. I use GT and spray to overcome the pain. ठीक है। I also have arthritis
of the neck Arthritis in neck and the back. and back. ठीक है. Spine is also affected in the arthritis. Arthritis. What's your age? उम्र आपकी कितनी है? My age 67. 67. और weight आपका कोई weight का अंदाजा हो? Pardon? वजन आपका weight कितना होगा? Weight is about 96 96 kilo. ठीक है. ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ डॉक्टर साहब से. आप लाइन पे भी रहें. बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का. डॉक्टर साहब, he has arthritis in the neck, in the back and all body pain. He's had about 10 heart attacks and he's also suffering from angina. 96 kg is his weight and he's about 67 years old. What treatments can the most important reduction of the weight. Reduction of weight. Because usually there are studies like if you have extra 1 kg upper than I mean the normal things. As example, if you have you are 160 centimeter, as example, it's supposed to be 60 kilo or 65, and then every extra kilo you have chance 13% to be to have osteoarthritis. If 10 kilo, then 130%. For that, if you reduce the weight, first thing. Second thing, the food is supposed to be good diet and exercise, because very good exercise, very good for people who had heart problem. Also the emotional, it's supposed not live all the time stress, because some patient some news or very bad news, and then he think about a lot of about this one, and will affect the heart, will affect joint. I have studied about the relation with emotional disturbance and arthritis, and it could exaggerate the pain. So this second thing. Third thing, avoid to go upstairs. Use lifts, and you mean the most important, don't take any non-steroidal anti-inflammatory, because this will affect heart again. As example, we treat some doctor give non-steroidal which affects stomach, and give another thing to prevent stomach problem. So I mean 2 drugs. One things get better, the other exaggerate one. So try to avoid this non-steroidal anti-inflammatory, and drink water. Many people now, because cold weather, they avoid to drink water, but at least 2.5 liters at least daily. And try olive oil, good fish instead of meat and chicken. So ये डॉक्टर साहब ने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे वज़न का उन्होंने कहा कि पहली चीज़ आप वेट अपना वज़न कम करने की कोशिश करें, उससे चीज़ों के अंदर बेहतरी आएगी. डाइट का डॉक्टर साहब ने तस्करा कहा कि मछली, फ़िश है, ऑलिव ऑयल है, ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैतून का तेल, तो इसके अंदर आपकी बेहतरी आएगी. स्टेयर्स को अवॉइड करें, सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय लिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लिफ्ट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें. और इमोशनल स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें कि अगर स्ट्रेस है या आपको कोई भी जहनी दबाव या तनाव के शिकार हैं, तो कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा बाहर निकल सकें. डॉक्टर साहब, our method also help him in pain. Exactly. इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट जो है, फिर अगर आप इस ट्रीटमेंट की तरफ भी आते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह एक होलिस्टिक सोल्यूशन जो है वो बेहतरी उसके अंदर आ सकेगी. डॉक्टर साहब, the other question was the lady was 68 years of age, 60 kilo. Her weight, she had pain, numbness in the hands. Actually, there is many causes of numbness of the hand, either cervical, neck, or shoulder problem, or sometimes tennis elbow, sometimes carpal tunnel syndrome. And carpal tunnel syndrome usually take mainly 3 fingers, either right and left. And one of this complication of either overweight, thyroid disease, diabetes, pregnancy, and this is very easy. Don't do operation.
Some oh, I did operation, it's return again. There is, I mean, very simple method to treat this one. Don't take any non-steroidal, as I told you before. Also special diet, good for hair, because some and this the method of sleeping. Some patients said like this. Sometimes put it under the pillow. Under the pillow. Yeah, this will become numbness. But the most important, double check if she has neck pain. Then maybe this one from the wrist. From the cervical. If she has osteoarthritis or disc prolapse or muscle spasm, because as example, if you make like this, the mobile like this, as you put 22 kilos a kilogram above your head. If you make like this, about 14 kilo. But this is supposed to be like this. Fair enough. So the posture is important. The posture is very important for numbness. And this some patient like sit down like this. Very. And the posture very important. वही डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप अपना पोस्चर सही रखें, जिनके नमनेस हो, सर्वाइकल अगर इशू है उसको दिखाएं, कंधों के अंदर अगर कोई आपके प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर कराएं, और आर्थराइटिस जो है उसके हवाले से भी है। अच्छा, 2 कॉल्स हैं, 2 मिनट हैं हमारे पास, तो जल्दी से आप लोगों के सवालात लेते हैं, डॉक्टर साहब से जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कहिए सवाल। जी मेरी एक फ्रेंड है, उनके घुटनों में बहुत सवेयर टाइप का आर्थराइटिस है, तो उनको सजेस्ट किया गया कि ऑपरेशन के लिए, तो आया उससे पहले उनकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है? नंबर 1 और नंबर 2, मुझे है आर्थराइटिस लेकिन सवेयर टाइप पे नहीं है, तो मेरे लिए क्या है, मेरे घुटनों में और पाँव में है। सही जी, और जब स्ट्रेस हो या कुछ सर्दी लगे या कुछ इस तरह करके तो मेरे एकदम से स्वेलन हो जाती है। ठीक है, आपकी दोस्त की एज कितनी है आपको? उनकी एज नियरली 70 है। नियरली 70 है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और कॉलर भी है, उनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, सवाल पूछिए। Yes, brother. I would just like to know about the what do you think on regards of cannabis oil and cancer? Sorry? What in regards of cannabis oil and cancer? What are your views on that? Okay, cannabis and cancer के हवाले से बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब, two quick questions. One, she said that she has a friend about 70 years of age, and she's been told that she needs operation in her knees as well. And I think she's suffering from arthritis and there's a severe pain. And for her own self, she has minor arthritis, but her knees get swollen and in winters especially. And she suffers a lot of pain as well. So I think we have 1 minute to the break. So what हम लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी पहले ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से फिर वापस आके डॉक्टर साहब विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, ताकि कोई जो आपका सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकें। तो एक हम लोग प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा आपसे मुलाकात कराते हैं डॉक्टर दिया हुसैन साहब से, जो कि इस्लाम चैनल उर्दू पे आज आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर दिया हुसैन साहब से आज हमारी गुफ्तगू हो रही है रूमेटिज़म के हवाले से, अरकुनिसा, आर्थराइटिस, मुख्तलिफ जोड़ों के दर्द के हवाले से। लाइव आपने डेमो देखा कि कैसे इनके तरीक़ा इलाज के तहत लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है और इमीडिएट कुछ रिजल्ट्स भी उसके अंदर नज़र आते हैं। आप तमाम हज़रात की कॉल्स का बहुत शुक्रिया। और भी कोई सवालात हों तो ज़रूर हमारा जो ये आखिरी सेगमेंट है इसमें आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर दिया हुसैन साहब हमारे साथ यहाँ पर जब तक मौजूद हैं। आप ऑनलाइन अगर हैं तो वेबसाइट पर जाके भी भेज सकते हैं। आप अगर ऐप के ज़रिए से देख रहे हैं तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या लाइव कॉल्स का जो हमारा सिलसिला है जिसका नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, फ़ोन नंबर, तो उस पर ज़रूर कॉल करके आप हमसे यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जस्ट बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक देयर वर 2 क्वेश्चंस। I think one lady asked about swelling on her knees, especially during the winters. She has mild arthritis, but she gets swelling on the knees in the winters. What can be the cure for that? Yeah, actually, if there is pain with swelling, what this means arthritis, and it's got several causes. One of them osteoarthritis, maybe reactive arthritis, inflammatory arthritis, could be one of
due to injury before what they call usually or complication of other diseases. So we try to find the cause first, and then second, to see if there is swelling, if there is hotness, there is inflammation. And in this case, we usually use cold pack, not hot pack, because it's already inflamed. Ice packs. And ask patient if he has more weight. We try to reduce the weight, as before I told you about this osteoarthritis. And the diet, very important. Also avoid to go upstairs, downstairs. And lab test, very important. Lab test. Yeah, blood test to see if there is inflammation in the blood. Could we treat by, although I am doing what they call holistic approach, which do many things, but I use some drugs for treatment, and if patient need referral to surgeon to make operation, then if needed, I will refer. Fair enough. Just not only make Okay, we'll take one more call and then we'll go to the second question as well. We have one more caller. Assalamu alaikum. Walaikum salam. जी जनाब पूछिए सवाल. Just a quick question. I think my father was on the line a few minutes ago. ठीक है. And just a quick question with regards to his pain now. He was on the phone with the 67-year-old gentleman with hip problems, and he forgot to mention that he has a broken elbow. Broken elbow as well. Yes, and necrosis of the hips. And due to his cardiac problems, the doctors here saying there's limited treatment what they can offer. So they can't operate on him. They can't replace his hips. They can't fix his broken arm other than what it's already fixed. So what further treatment can Dr. Dia offer that the other doctors can't due to his cardiac problems? ठीक है, बड़ा अहम आपका सवाल है. मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से. बिल्कुल इसके हवाले से जो आपने कॉल जो पहले भी करके आपके वाले साहब ने पूछा था, इसका भी जवाब मैं लेता हूँ. एक और कॉलर है, फिर हम एक साथ सवालों के जवाब लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी सवाल पूछिए. I've got a trapped nerve. Trapped, sorry, what? Trapped nerve. Trapped nerve. From my shoulders going through to my shoulder blade and down to my arm. I can't turn to the left. It causes a lot of pain. Just wondering if you know a solution for it, 'cause I can't go to sleep either. Okay. आप लाइन पे रहिएगा. I can't lie. I can't sleep on my left. I can't sleep on my right because it pulls. I can't sleep. Fair enough. Like stay on my back. Yeah. It's been terrible. It's been the last 10 days. So. I can imagine. Stay on the line. I'll ask Dr. Saab this question first. Dr. Saab, trapped nerve in the shoulder, going from the back all the way down. She can't sleep, can't get on the back. She couldn't move your hand like this, or you cannot raise it up. Can you get your hand behind your back or raise it behind your head? Just bear with me one moment. Okay, she's going to try now. Yeah, I could get it behind my back, yes. And behind your head, like this? Behind my head, yes, I can. She can. Yeah, it's a simple thing. The tendinitis. Yeah, but when I go to sleep, the shoulder pain and towards the spine, there's a lot of pain. So I have to get up. What about neck? Any pain in the neck? Any pain in the neck? Yes, on the left side only. It's all on the left side. On the left side. Any numbness of? Any numbness in your fingertips? ये हाथों की जो पोर होती हैं. Any numbness in the fingertips? Yes, mainly the thumb. Mainly the thumb. Yes. Just the thumb. Okay. Okay. ठीक है. I'll get answer to you as well. Numbness and the trapped nerve. We'll take one more call. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी आप सवाल पूछे. जी रहान भाई कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, आप ठीक ठाक हैं? जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पूरे लंदन को पेने हैं. अल्लाह करे हाल हो जाए सबकी. बिल्कुल. मेरा सवाल ये है जी कि मुझे बहुत अर्सा पहले मेरा जो बैक बोन है ना, मेरे पाँव से मैं स्लिप हुई थी. अच्छा. तो वो लोअर बैक सारी लाइफ हो गई, तकरीबन पूरी लाइफ कह लें, 30-40 ईयर्स वो. सही. तो उसकी वजह से जब मुझे स्ट्रेस होता है तो फिर सर का जो पीछे हेड है वहाँ से और पीछे बैक में
बहुत दर्द होती है। तो इसके लिए कोई सजेशन आप बता सकते हैं? और मैं वो अपना टायर होता है ना, ज्यादा देर अगर मुझे कहीं बैठना पड़ जाए तो मैं उसके टायर होल होता है, वो मेरी टच होती है बोन, बैक बोन, तो दर्द होती है उसमें बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से क्या आप बताइएगा कि किस तरह फिर इसका कोई ट्रीटमेंट अगर ठीक है हो सके तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल्स करने का आपका। हम लोग जवाब लेते हैं हमारे पास। Dr. Saab, we've got quite a few questions now. Let's go them one by one. The son who called about his dad, we spoke about 90 kilograms, 67 years of age. He's got a broken elbow, and the doctors, because of his heart conditions, are saying that we can't do any surgery or anything else. What other treatment options are there then? Yeah, as FDA approved that this instrument, there is no side effect. So with your lower laser therapy? Any patient couldn't do operation. We help them by this, relieve the pain. Depend on and also the most important food, diet. And I think I will help him in this situation. So if he likes to explore other options, there are treatments. Yeah, this treatment. Okay. Then the other one, doctor, was about the trapped nerve. So she said that she had numbness on the thumb, trapped nerve, neck pain on the left side. Yeah, actually, we have to examine to see the cause. But one of the causes may be something in the cervical. If she has X-ray, she can bring the X-ray to me to see the cause of this. Because the pain usually radiated to until thumb as well. Sometime take 3 fingers, depend on the vertebra which one has a problem. Also sometime because there is tendinitis, trapped nerve, there is no much what they call restriction of the movement. So I think I hope we can help her. So with an X-ray you can find out the cause, and then we treat. Go for the treatment as well. And the third one, I think the auntie, she's a regular caller, mashallah. She called that she slipped some time ago, quite a while ago, and she had major injury, I think, in the lower back. So whenever she sits down, her lower backbone actually touches her bones as well. And then obviously she gets a lot of pain on the back of it. So what can be a treatment option? Yeah, this is our treatment very good for her. And try to avoid, as I told you before, non-steroidal anti-inflammatory, or she can use it temporary until I come next time. So for pain, she can get some like maybe Panadol or something. Panadol or anything, and then you can review if needed to in detail as well. And Dr. one quick question. I think we are getting to the end of the program. I'm sorry. Also reduce the weight. Very important. Weight reduction. For back pain. And drink a lot of water. Lot of water. सर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वज़न एक तो अपना कम करें, पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस को थोड़ा बहुत अवॉइड करें, और फिर ये कि इसके एक्सरेज वगैरह करा के और ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर साहब के पास भी रब्ता करके ले सकते हैं, और इस हवाले से भी कि और क्या ऐसे तरीक़ाकार हो सकता है कि जो इंजरी के सर्जरी के बगैर समझें कि कोई ऐसा ऑप्शन don't sit more than half an hour in one place. She has to move around. 30 minutes, half an hour से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा बैठे नहीं एक जगह, हिलते रहें ताकि बॉडी के अंदर इसमें मूवमेंट रहे. डॉक्टर साहब, बिफोर वी इंशाल्लाह go to the finish as well, prevention, rheumatic diseases, what's the prevention? Is there any prevention possible? Key things to remember? Actually, we try to prevent disease. It's better than treat the disease. Treating it. Yeah. The most important lifestyle and activities. Stretching activities, strengthening muscle, daily activities such as lift heavy things. We have to we have to change to make it healthy. As example, you cannot carry things like this, or you want to bend like this to carry. You have to sit down and little bit ensure the weight is divided. To avoid and prolonged standing, prolonged sitting, healthy diet, healthy lifestyle habits. It has to be changed to normal, and very important the diet and reducing weight, because as I told you before,
every extra weight you have chance to 13% for us to have osteoarthritis. And physical activities. The problem here, sometimes patient stay at home, watch TV, watch TV, and take what they call soft drink and junk food. This is and become heavy, obese. So it's the more holistic thing. Holistic, yeah. And Dr. Saab, I think people would like to know, you travel a lot. You have clinic here and then Istanbul and Jeddah. So when are you back in London again? I think we should. I think in the 3rd of 4th January in 10 Harley Street. So next every 2 weeks you come back to London as well to see the patient. As I told you, just one treatment, and we'll check after 2 weeks. If he has pain, we'll come again. No pain. Some people after 3 months, 4 months come again. Some people after 3 weeks. Depend on the situation, because we have natural substance in our body like this. If you have a lot, it will take long. You can the pain relief for a long time. If you had small, then short period goes away. And this is the most important to increase this natural substance. Diet. lifestyle, exercise activities. ये डॉक्टर साहब ने जैसे तस्करा किया कि डॉक्टर साहब हर 2 हफ्ते बाद लंदन, इस्तांबुल, जद्दा में जो इनके क्लिनिक्स हैं इनमें जाते हैं, वहाँ पे जाके भी, और इस पे इस्लाम चैनल के बल्कि मुख्तलिफ इश्तिहारों में आप देख भी रहे होंगे डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स का भी तस्करा है एडवर्टीजमेंट्स के अंदर भी, तो आप ज़रूर उसके हवाले से कह सकते हैं। लेकिन जो असल बात डॉक्टर साहब ने बात कही कि लाइफस्टाइल, वज़न के ऊपर कंट्रोल करना, एक्सरसाइज के अंदर थोड़ी बहुत एहतियात इस हवाले से करना है कि कोई एकदम आप चीज़ हैवी ना उठा लें ज़मीन से और सुपरमैन बन जाएं एकदम। उससे बेहतर है कि प्रिवेंशन के ज़रूर इस हवाले से एहतियात की जाए और कोशिश करते रहें कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं तो ज़रूर इसको हवाले से आप और भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन शो टुडे एंड वी होप you'll continue with this, and inshallah 3rd and 4th January you mentioned you'll be in London, so we can inshallah try and design another program. Thank you very much. Thank you very much. नाज़रीन किराम, डॉक्टर दया हुसैन साहब से आज हमने आपकी गुफ्तगू कराई, कुछ आपने सवालात पूछे, कुछ हमने सवालात पूछे, और जैसे हमने आपको बताया कि इस्लाम चैनल पे अगर आप और कोई डिटेल्ड सवालात डॉक्टर साहब से करना चाहें तो ज़रूर चैनल से आप रब्ता कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट भी मिल सकता है। कोई और सवालात हों स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के हवाले से हों या अपने कोई स्पेसिफिक दर्द के हवाले से हो तो ज़रूर आप रब्ता करके बात कर सकते हैं। लेकिन दर हकीकत डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इंसान के जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे अंदर एक निज़ाम बनाया है बीमारियों से लड़ने का, दर्द को रफ़ा करने का, उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है कि उसके ज़रिए से इंसान बहुत सारी चीज़ों से, स्टेरॉइड से और दवाओं से बचत के ज़रिए से और चीज़ें भी निकाल सकता है। तो लाइफस्टाइल, वज़न, खाना पीना, जंक फूड का तज़किरा आया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड्स, इनको भी अगर अवॉइड करते रहेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। और दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी होती है, तो वो भी ज़रूर इसके हवाले से आप करके और अपने ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में डॉक्टर दया हुसैन साहब से आज हमने आपका तारुफ़ भी कराया, कुछ गुफ्तगू की, कुछ सवालात किए, कुछ आपसे पूछा, कुछ हमने बताया, कुछ सलीम भाई यहाँ पे आए, आपने ट्रीटमेंट के लाइव मनाज़िर भी देखे कि कैसे लेज़र के ज़रिए से यहाँ पे ये जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं कानों के अंदर, राइट ईयर और लेफ़्ट ईयर के अंदर, हाथ और पाँवों के अंदर भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू की और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो ज़रूर इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह जब डॉक्टर साहब अगली बार तशरीफ़ लाएँगे तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आपसे भी गुफ्तगू रखेंगे, आपसे सवालात भी लेंगे, डॉक्टर साहब से और चीज़ें भी पूछते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस्लाम चैनल आपके साथ शामिल रहते हुए साथ लेके चले। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।